Good afternoon, everyone. Join fast, students. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Students, join fast. What about others? Today also we will continue the same. Yesterday Gram Sabha, I have started the Gram Sabha. So that same one I will continue. Gram Sabha, that because we have not finished yesterday. So same thing we will continue today also. Okay. So yesterday we started about that Gram Sabha. Okay. So what is Gram Sabha? So yesterday I told that the Gram Sabha means it is a meeting. Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. That is only known as a Gram Sabha. Meeting है जहाँ पर सारे villagers जो है those who are living in that covered by that panchayat. So adult above 18 years can only join the Gram Sabha meeting. Okay, so anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. ठीक है? Then yesterday we saw that the story of a Hardas village. Okay, the story of Hardas village, that means Hardas village are keen to find out what their new panchayat means. That was a special day for them because after election, this was the first meeting after election and that Gram Panchayat. So everyone, the people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the development of that particular village. Okay. So Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President. So Panchayat President means who? Panchayat President means Sarpanch. Okay. Panchayat President means Sarpanch. Panchayat President here Sarpanch and that five member. Panch means five members. So president and that five members. So who will conduct that meeting, Gram Sabha meeting? That Sarpanch and the five member of that. So the Gram Sabha meeting begins with the Panchayat president, who is also called the Sarpanch, and the member of the Panchayat, that is the five Panchayat. So that particular meeting, why they conduct this meeting? Just to discuss the various issues. Why they conduct that meeting? First meeting after election, that first meeting conducted in that Hardas village. Why? Just to discuss with the people and the plan what they are going to do है ना, for the development of that village. वो विलेज के डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या प्लान किए हैं वो सारा डिस्कस करने के लिए. सेकेंड, वहां के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं, वो सारा चीज भी उस मीटिंग में डिस्कस होने वाला था. ठीक है. So village panchayat, that means divided into different ward. अब ये जो village पंचायत जो होता है, village, हर एक village में कल भी मैंने आपको बताया था. अब ये जो सरपंच जो है, ये पर्टिकुलर या तो कोई वन विलेज के होंगे कोई सरपंच, या सरपंच को जो है दो तीन विलेज उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है. If village is very small, then the sarpanch and the five members has to look after two more villages.
इट्स डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स, उस विलेज में कितने फैमिलीज है, कितने मेंबर्स है, इसके ऊपर कितना बड़ा है एरिया वाइज, वो डिपेंड करता है कि डिपेंड उसी पे डिपेंड करता है कि सरपंच जो है वो एक विलेज के है या उनको 2-3 विलेज हैंडल करना पड़ता है। अगर विलेज काफी बड़ा है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबर्स जाते हैं, तो वो एक ही विलेज के सरपंच होंगे। और अगर छोटे हैं तो सरपंच को और भी बहुत 2-3 विलेज उनको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब मीटिंग जब हुआ है स्टार्ट, वहां पर एक स्टोरी के उस पे दिया हुआ है, मीटिंग जो है वहां पर, a villagers called Tija begins the meeting by saying the water problem in a हर। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, मींस ये जो विलेज पंचायत है, विलेज पंचायत is divided into ward, different wards में वो डिवाइड, किसमें वो डिवाइड होते हैं, वार्ड्स। विलेज पंचायत जो है वो वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। आप बच्चनपुर में चले जाओ या आप कोई बड़े विलेज में जाओगे तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरह से उनको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है, और हर एक वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करते हैं, जो हम बोल रहे हैं ना 5-1 जो होते हैं, तो वो जो है वो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव भी हम उनको वार्ड रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है, जिस तरह से हमने देखा है कि कंट्री को स्टेट में डिवाइड किया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को विलेज में किया है, उसी तरह विलेज पंचायत को भी अगर बहुत बड़ा है तो उसको किसमें डिवाइड करते हैं, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। ओके, और ये वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव वोट करके ही इलेक्ट होते हैं। जैसे कास्ट हम लोग वोट कास्ट करते, इलेक्शन होता है, वो करने के बाद ही ये वार्ड रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कहा जाता है, वार्ड सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, then every village panchayat is divided into wards, that is a smaller area, and each ward elect a representative who is known as a ward member। just now ये जो वार्ड जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज अ वार्ड रिप्रेजेंटेटिव, मींस पंच, है ना, मैंने आपको बोला था सरपंच एंड 5 मेंबर्स। ओके, पंच 5 members means punch, so that is known as a ward representative. Okay, then all the members of the Gram Sabha also elect a sarpanch who is the panchayat president, that we already discussed. The ward panch and the sarpanch form the Gram Panchayat. Now ये जो विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत फॉर्म होता है, ये कौन फॉर्म होता है, ये सरपंच एंड 5 वार्ड मेंबर्स, वार्ड रिप्रेजेंटेटिव। सरपंच एंड वार्ड रिप्रेजेंटेटिव ओनली फॉर्म द ग्राम पंचायत, or we can say विलेज पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत। आप कोई भी विलेज में चले जाओ तो वहां पर आपको ग्राम पंचायत का एक बोर्ड दिखेगा, ऑफिस दिखेगा, वहां सरपंच बैठते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वार्ड मेंबर्स बैठते हैं, और भी जो लोग हैं गांव के जरिए काम करते हैं, ऑफिशियल्स जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑफिशियल्स, वो भी वहां पर सरपंच ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, the ward panch and the sarpanch form the gram panchayat. The gram panchayat is elected for 5 years. The procedure everything is same, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रोसीजर है और लोकसभा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, the procedure is same. They also elected this gram panchayat sarpanch and panch ward representative. They also elected for a 5 years, 5 साल के लिए वो भी इलेक्टेड थे, and every 5 years again election, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, और वो फिर से जो भी मतलब जिस पार्टी के लोग भी वो इलेक्ट होते हैं, सेम प्रोसीजर सेम है, डिफरेंट पार्टीज के जो कैंडिडेट्स वो खड़े होते हैं, और जो मैक्सिमम जिसको वोट मिलता है वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ओके,
Then Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of the Gram Panchayat. This is very very important. एक secretary भी होता है. कौन होता है? सेक्रेटरी भी होता है. और ये सेक्रेटरी जो है इसको कोई इलेक्ट नहीं करते. सेक्रेटरी को जो है कोई इलेक्ट नहीं करते. ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं. सेक्रेटरी मीन्स गवर्नमेंट ओनली अपॉइंटेड द सेक्रेटरी. इसमें हम लोग सेक्रेटरी को इलेक्ट नहीं करते. सेक्रेटरी जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं. सेक्रेटरी जो है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है. Who is also a secretary of the Gram Panchayat, Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. Now, what work the secretary actually doing? Secretary means he will call the meeting. Then in meeting, whatever point discussed in that meeting, he has to keep everything record. And then he has to submit all this thing to the district collector. है ना? ये जो है ये गवर्नमेंट को फिर उनको सब वो because he is appointed by government है ना? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है. सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स जो है उनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ना हमारे बाय वोटिंग. ओके, कास्टिंग वोट हमने उनको इलेक्ट किया. बट सेक्रेटरी इलेक्शन से नहीं अपॉइंट. सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया. किसने अपॉइंटमेंट किया? गवर्नमेंट है ना. अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. ओके, सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. ओके, he is appointed by government. So his work is he has to call the meeting. He has to call the Gram Sabha meeting. Then in that meeting, whatever points discussed in that meeting, everything he has to record. And then all that he has to give to the district collector or the officials. When the office को उसको submit करना. Okay, clear? So, and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding. Now, I hope it's clear. Gram Sabha means what, Gram Panchayat means what, ward member means what, Sarpanch president means what, and secretary means what, and how they are elected. किस तरह से वो elect होते हैं. जैसे सरपंच और 5 members को वोट करके हम इलेक्ट करते हैं. 5 years के लिए वो इलेक्ट होते हैं. And then they form a Gram Panchayat. They form a Gram Panchayat. Whereas secretary is appointed by government. Okay, he is the government officials. His work is he has to call the Gram Sabha meeting. He has to keep all the records. This is only the work of the secretary. Okay, so this is all about the Gram. Now, in that first meeting, that means we are discussing about the Hardas village. हम कौन से इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? हरदास विलेज. So in that Hardas village, whatever the point discussed, that we will see. Okay. Now, a villager called Tija begins the meeting by saying the water problem in a Hardas has become a very acute. 1 minute. Yesterday I told they said that repairing the road that connects the village to the main highway. ये किसने डिस्कस किया था? प्लांट सरपंच and the ward representative. They said that we will construct a new road and the village it directly connect with the highways. Highways के साथ village के road को connect करेंगे. ये उनका प्लान था. सेकेंड जो है इशू, एक तीजा नाम की कोई थी, वो उन्होंने एक इशू वो प्रॉब्लम बताया कि गांव में जो है एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो है पानी का प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है. अब हाउ दे हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled.
We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river, which is 3 kilometers away to get the water. Means in that particular village, hand pump is also there, but the level of the hand pump is very less, and so water is dry up. So the women has to go 3 kilometers away, Suru river. From there, every day they have to go to there 3 kilometers, and they have to bring the water. So that's why the Hardas village people have faced an acute water shortage, okay, water problem. So one member suggests the piping water from the Suru and making. So here see in that case, different members they are suggesting, they are advising अलग अलग इशू. जब मीटिंग हो रहा है तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं. कोई बोल रहे हैं कि जो पंप है, हैंड पंप जो है वहां उस गांव में, उसको फिर से हम लोग क्या करें, क्लीन करें. बहुत सारे हैंड पंप जो है वो क्लीन नहीं होने की वजह से वाटर उसमें वो नहीं हो रहा, रिचार्ज नहीं हो रहा है. कोई बोल रहा है कि हम सूरू रिवर से एक पाइपलाइन को कनेक्ट कर दें हमारे गांव तक के लिए. सो ऐसे अलग अलग, बट कोई भी सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है. दीज आर ऑल दिस एडवाइसेस परमानेंट, टेम्पररी. ये सारे जो है ये क्या है, टेम्पररीली वो एडवाइस है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन मीन्स वो होता है कि जो कभी भी और वाटर शॉर्टेज उस गांव के लोगों को ना हो. तो ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन किसी में भी नहीं है. सब अपने अपने व्यूज जो है वो ग्राम पंचायत को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. But the other thing that this will be in this case what they have to check the budget also, है ना. ग्राम पंचायत के पास कितना बजट है, ये सारे साल 5 years they have to वर्क. 5 years उनको, उनके गवर्नमेंट को 5 years काम करना है. अब वो 5 years में बहुत सारी डेवलपमेंट उनको करना है. एक तो क्या रोड का करेंगे, फिर हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी का चेक करेंगे, अलग अलग जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे चीज वो फैसिलिटीज विलेजेस को प्रोवाइड करना चाहते हैं. अब उनके पास फंड भी तो चाहिए. फंड अभी ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड रिप्रेजेंटेटिव दे विल नॉट गिव मनी फ्रॉम देयर साइड ना, देयर ओन मनी. So from where they will get the money? Fund. Government will provide the fund. अब उतना फंड में so expensive, they will check the कितना expensive होगा. तो बोली ये सारे चीज जो है बहुत expensive है. So what at last what solutions they found? But the others think that all this will be expensive. It's the better they feel to deepen the hand pumps and clean the wells for this season. Teja says this is not enough. We need to do something more permanent as the groundwater levels seem to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard that the government gave money for this work. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was the interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about inner details. अब किसी ने, अनवर ने एक एडवाइस दिया कि वो कहीं कभी कोई उसके ब्रदर के विलेज में गया, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां गांव में ऐसे चेक डैम्स बनाए गए हैं, देन हैंड पंप्स, वाटरशेड डेवलपमेंट उन्होंने किया. दैट दीज आर द परमानेंट सॉल्यूशन. ये सारा क्या है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है. सो देन ग्राम पंचायत उन्होंने क्या बताया कि ओके, इट्स अ गुड आइडिया, सो गो एंड फाइंड आउट कि कितने एक्सपेंसिव होगा, हाउ वी हैव टू डू. ये सारा चीज उन्होंने लोगों को बोला है. मीन्स कौन ये फाइंड आउट करेगा, जो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव है ही विल, और द पीपल दोज हु आर वर्किंग अंडर द वार्ड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, ये उन लोग फाइंड आउट करेंगे. So this is, one is the road construction of road, second one is the water shortage, acute water shortage, so check dams and watershed development. This, so what another, अब उनमें से one more thing it is very important, that is the BPL. So this word is new for you maybe,
BPL means below poverty line. Below poverty line. BPL means below poverty line. अब उन्होंने रोड वाटर हो गया. The next one is that is the BPL. Now BPL means below poverty line. Now every villagers, their village people. Now see here one more thing. Now the government officials, those who are working in a government school, teachers or in other department, they are only visiting in a summer vacation. They are visiting in different villages and they are preparing the list of the person. Means those who are coming under the BPL. वो ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. गांव के लोग नहीं करते. गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वे लोग जो है समर वेकेशन में उनको ये ड्यूटी दिया जाता है. ये उनका ड्यूटी होता है कि वो जो उनके अंडर में जिस जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के विलेज में हो जाए. उनको 2-3 विलेज दिया जाता है इंचार्ज कि आप इस गांव के विलेज में विजिट करो और इस विलेज में जितने भी मेंबर्स है, जो रजिस्टर्ड मेंबर इन द सेंस रजिस्टर्ड मेंबर, ओके, रजिस्टर्ड पीपल, उनमें से कितने लोग जो है वो बीपीएल में आते हैं. बीपीएल इन द सेंस बिलो पॉवर्टी लाइन में. सो द टीचर्स दे हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट. दिस इज द गोल. Now in that, the next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalizations of the list of the people below the poverty line, that is BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. So everything is openly होनी है ना. यहाँ पर किसी से कोई चीज हाइड नहीं होगी. ये एक सबसे अच्छी चीज कि ओपन ग्राम सभा मीटिंग में ही ओपनली वो डिस्कस्ड होता है कि गांव में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या किसी को जो क्वेरीज है, that everything in an open. So ग्राम सभा मीटिंग में ही वो लिस्ट भी फाइनलाइज करना है. किसका? बीपीएल लिस्ट. बीपीएल लिस्ट इसीलिए प्रिपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बीपीएल लिस्ट में आते हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है. नाउ फैसिलिटीज मींस उनके पास क्या होना चाहिए? राशन कार्ड होना चाहिए. राशन कार्ड तो सबके पास होता है, बट वो राशन कार्ड, बीपीएल का जो राशन कार्ड, दैट इज डिफरेंट है ना. बीपीएल का राशन कार्ड जो है वो डिफरेंट, और वो राशन कार्ड शो करने के बाद उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से. कैसे? जैसे जो राशन मिलता है वो कम कॉस्ट वाला, चीप रेट में उनको सारे सामान प्रोवाइड किया जाता है. जो उनको सीड्स और बाकी जो फर्टिलाइजर्स जो भी उनको फार्मिंग करने के लिए लगता है उसके में उनको सब्सिडीज जो है वो उनको मिल. सो गवर्नमेंट जो है बिलो जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सारा चीज जो है वो फ्री में प्रोवाइड करती है. इसके लिए ही ये बीपीएल लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है हर एक गांव में. ठीक है. अब इसमें दिया गया है कि as soon as the list is read out by a people began to whisper that Natwar has just brought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. So how can he be a below poverty line? Now, अब देखो हर गांव में ये तो होता है, क्योंकि पहले गांव में क्या होता था? जमींदार. जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड्स, those who have many lands. So landlords, जमींदार पैसे वाले होते. तो जमींदार का डर जो है पहले तो ये ग्राम पंचायत, ये इलेक्शन, ये सब विलेजेस में होता ही नहीं था. जमींदारी सब कुछ करते थे. और जमींदार यू नो वेरी वेल, मेनी टाइम्स वी हैव सीन इन द मूवीज एंड सीरियल्स कि जमींदार किस तरह से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट. क्या होते हैं वो? इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, इलिटरेट होते हैं. और जमींदार क्या करते हैं उनसे? जमींदार जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन से कुछ भी लिख के उनसे थंब ले लेते हैं और बाद में उनको हैरेस करते रहते हैं. अगर वो कुछ मनी भी उनसे मनी लेते हैं तो वो जो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाते रहते हैं. फिर उनका जमीन ले लेना, उनका घर लेना, ये जमींदार जो है हैरेसमेंट पहले करते थे. इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में एक इलेक्शन प्रोसीजर्स जो है वो स्टार्ट किया है कि नहीं अब सरकार. तो अब ये चीज जो है थोड़ा सा विलेज में कम हो गया अभी, क्योंकि गवर्नमेंट आ गई, सरपंच प्रेसिडेंट वो हैंडल करते हैं.
ठीक है, इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व, पहले विलेज में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, जमींदारी सब कुछ करते थे। उस टाइम पे लोगों को बहुत, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, उसको बहुत हैरेस करते, ये आपको भी पता है, आपने बहुत सारे मूवीज में इसमें देखे होंगे। तो बिलो पॉवर्टी गवर्नमेंट आने के बाद ये चीज कम हो गई अभी। तो जब उन्होंने ये लिस्ट किया तो नटवर जो है उसके बेटे ने उसको कलर टीवी दिया, बाइक दिया, तो दैट मीन्स ही विल नॉट अ बिलो पॉवर्टी लाइन, रिच है। बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स व्हाट, जिनके पास बहुत गरीब होते हैं, पैसे नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होती है, that peoples are knowing as a below poverty line. So Natwar, how the Natwar will become a below poverty, उस below poverty line में उसका नाम कैसे आएगा, ये आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो Surajmal Matwan, that the person sitting next to him, Suraj said to Shuki Bai, and how did Birju's name get on this list, on this list? He has so much land. So that means ये सब चीज जो है देख रहे हैं कि सूरजमल, नटवर, बिरजू, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी बिलो पॉवर्टी लाइन में इन लोग आ रहे हैं। सो हाउ, कैसे, और जो एक्चुअल जो पॉवर्टी में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आना चाहिए था, बहुत गरीब थे, उसका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं था। फिर किसी ने, बट कोई बोल नहीं पा रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर कौन बैठे थे ग्राम सभा मीटिंग में, जमींदार अमीर चंद, और उसके डर से कोई ये चीज बोल नहीं पा रहा था कि गलत लिस्ट प्रिपेयर किया। किसने प्रिपेयर किया, बाद में किसी ने खड़े होके बोला। तो अब लिस्ट किसने प्रिपेयर किया, तो कोई टीचर ने प्रिपेयर किया, सब उसको बोला। तो ये प्रोसीजर गांव में इस तरह से होता चल रहा था। ठीक है, okay, time is also over. So better, thank you all of you. Tomorrow we will continue the same. Okay, thank you all of you.